Welcome, student, to the next class of magnetism. In today's class, we will study the force on moving charge particle. When a charge particle moves in uniform magnetic field, it experiences a magnetic force. So, in brief, we will study the motion of charge particle in uniform magnetic field. Motion of charge particle in uniform magnetic field. This would be the today's topic. In next class, we will study the magnetic field on the axis of current carrying circular coil and Ampere's law. So let's begin. Force on, you can give the heading. Force on charged particle when it moves in uniform magnetic field. Now consider a charged particle, say it is plus q, v, and this is magnetic field, theta. So force on charged particle is given by q v cross v. So force is perpendicular to both velocity and magnetic field. This force can be written as qvb sine theta, where theta is the angle between velocity of charged particle and magnetic field. We should study the two cases. Case 1, when charged particle moves perpendicular to the magnetic field. So theta is 90 degree. In this case, it experiences the maximum force that is given by q into v into v. q into v into v. When charged particle moves perpendicular to the magnetic field. Okay, now we'll go for the second case. When charged particle moves parallel to the magnetic field. In this case, theta is 0, so the force is 0. Charge does not charge does not experiences any magnetic force. Any magnetic force. We can use the Fleming's left hand rule to determine the direction of force.
So you must remember note 1. The direction of motion of positive charge should be taken as the direction of current. Wait a minute. Taken as the direction of current. Note number 2. The direction of motion of negative charge should be taken as the direction opposite to the current. Opposite to the current. Then you can Fleming rules can be applied. अब देखिए कुछ एक्सिस सिस्टम, so are you done with this? ये दो नोट आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. The positive charge always moves in the direction of current. Suppose the positive charge is moving along positive x-axis. So positive x-axis should be taken as direction of current for applying the Fleming's left-hand rule. And suppose negative charge is moving along positive y direction. I am giving you the example. Suppose the negative charge is moving along positive y direction. Then what should be the direction of current? The direction of current should be the negative y-axis. Negative y-axis. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए. The direction of current should be the negative y-axis. Okay, so we'll do some example. And before we proceed for some examples, you must know that I cross j is k, j cross k is I, k cross I is j, and j cross I is minus k, k cross j is minus I, and I cross k is minus j. Now understand the axis system. This is plus x-axis, this is plus y-axis, this is minus y-axis, this is minus x-axis, and this is plus z-axis. Plus z-axis towards us. इसको हम बोलेंगे towards us. This is minus z-axis. तो प्लस z को एक्सिस को आप हमेशा ऐसे समझिए, towards us, आपकी तरफ, towards us means normal to plane, normal to the plane of paper. ये समझना जरूरी है. Plane of paper and outward, मतलब आप इसे बोल सकते हैं
डॉट, और माइनस जेड एक्सिस अवे फ्रॉम अस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड, दैट इज क्रॉस। प्लस जेड एक्सिस टुवर्ड्स अस, माइनस जेड एक्सिस हमसे दूर, प्लस एक्स एक्सिस हमारा राइट हैंड हो गया, माइनस एक्स एक्सिस हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, प्लस वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, माइनस वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से प्लस एक्स एक्सिस आवर राइट हैंड, माइनस एक्स एक्सिस आवर लेफ्ट हैंड। क्योंकि आप मेरा मिरर इमेज देख रहे हो तो आपको मेरा ये राइट हैंड दिख रहा होगा, एक्चुअली ये मेरा लेफ्ट हैंड है। प्लस वाई एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड, माइनस वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड, प्लस जेड अवे फ्रॉम अस, डॉट माइनस जेड टुवर्ड्स अस। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस चैट? ओके, और इसे आप नोट कर लीजिए। दिस इज अ 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। अब जैसे देखिए 2-3 क्वेश्चन में हम अप्लाई करके बताते हैं आपको कि कैसे किया जाता है। देखिए 2 एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, 2-3 ले लेंगे। अ प्रोटॉन is moving towards plus x-axis and a magnetic field acts along plus z-axis. In which direction? Proton will experience a magnetic force. देखिए F equal to Q V cross B. Charge on proton plus E. Velocity of proton plus x-axis. So it is Vi cross. Magnetic field is along plus z-axis. So it is Bk. So F will be EVB I cross K. I cross K is I cross K will be minus J. So electron will experience a magnetic force in minus y direction. अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्व करने वाला फैक्टर है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए मैंने लिया प्लस ई। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो मैं ऐसे क्या लेता, माइनस ई। द टफेस्ट पार्ट ऑफ motion of charged particle in uniform magnetic field, as student says, the direction, how to find the direction.
So this is the best way of finding out the direction. If you are given the question, the charge particle is moving along x-axis, y-axis or z-axis, etc. तो एक्सिस सिस्टम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. And you can use the Fleming's left hand rule also here. This is plus y plus x plus z minus z minus x minus y. You can apply Fleming's left hand rule. So this should be the direction of current, because positive charge always moves in the direction of current. And here positive charge is moving along plus x-axis. Magnetic field B, force FBI. I am solving for myself. FBI. तो ये सबसे पहले मैं करंट की फिंगर को प्लस एक्स पे रखूंगा. आप भी करिए. अब मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड पे लग रही है, मतलब प्लस जेड का मतलब है टुवर्ड्स मी. ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, इसको मैं अपनी तरफ टर्न करूंगा. तो मैं देखता हूं मेरा थंब नीचे की तरफ जा रहा है, और थंब का नीचे की तरफ जाना शो करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस वाई एक्सिस में. देखिए एफ बी आई, सबसे पहले करंट की फिंगर को मैं प्लस एक्स एक्सिस पे रखूंगा. उसके बाद मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड पे लग रही है, प्लस जेड का मतलब है मेरी तरफ. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर है, इसको मैं अपनी तरफ टर्न करूंगा. फिर मुझे पता चलता है कि थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है. थंब इज पॉइंटिंग इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन. और डाउनवर्ड डायरेक्शन डेफिनेटली यहाँ पर कौन सी है, निगेटिव वाई एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस की है. तो क्वेश्चन को दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए, दोनों तरह से सॉल्व करना आना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड दिस फ्लेमिंग, हाउ टू अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन सच सिचुएशन? क्योंकि अगर आप इसे नहीं सीखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यू शुड चैट विद मी वेदर, खुद करके देखिए. अच्छा, खुद करके देखिए आप, है ना. कॉपी में बना लीजिए प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस. तो दोनों तरह तरीके से इसको निकालना आना चाहिए. A further reducement in the syllabus by 20% more within a week, you will know, but you should study completely. Okay. तो ये दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. अब जैसे देखिए एक एग्जांपल 2 ले लेते हैं. An electron is moving along plus y-axis and a uniform magnetic field acts along plus x-axis. In which direction electron will experience a magnetic force? F equal to Q V cross B. Electron negatively charged particle minus E. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वेक्टर कहाँ है, y एक्सिस. सो इट इज Vj. मैग्नेटिक फील्ड प्लस x एक्सिस Bi कैप. क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि x एक्सिस का वेक्टर क्या है,
प्लस आई, वाई एक्सिस का वेक्टर क्या है प्लस जे, जेड एक्सिस का वेक्टर क्या है माइनस के। मैं इसको थोड़ा वेक्टर नोटेशन में भी क्लियर करना चाहता हूँ इसको, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मानते हुए कि ये सब आपको मालूम है, प्लस एक्स तो ये हो गया आई कैप, माइनस एक्स ये हो गया माइनस आई कैप, प्लस वाई तो ये जे कैप हो गया, माइनस वाई ये हो गया माइनस जे कैप, प्लस जेड प्लस के कैप माइनस जेड माइनस के कैप। तो ये हो गया माइनस साइन वी, ई वी क्रॉस ई वी बी, ई वी बी, जे क्रॉस आई is minus k, so the force will be EVB k cap. So electron will experience the magnetic force along plus z direction, plus z direction. So this you should remember. So do you understand it? आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया? Understood or not? सबसे पहले तो आप डायरेक्शन को कैलकुलेट करने सीखिए, उसके बाद समझ में आना जरूरी है, नहीं तो हम आगे बढ़ने में हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए, हम इसे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है प्लस वाई एक्सिस पे, चलिए करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हम माइनस वाई मानेंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस जेड एंड दिस इज माइनस जेड। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्लस वाई पे जा रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो ये अब हमारा जो डायरेक्शन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन प्लस वाई में जा रहा है तो करंट हम क्या लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस में लेंगे। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, एफ बी आई बी, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को मैं प्लस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में रखूंगा। आप भी करिए मेरे साथ, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को प्लस एक्स, आई एम सॉल्विंग फॉर माई सेल्फ, और प्रॉब्लम ये होती है कि आप मेरा मिरर इमेज देख रहे हैं, प्लस एक्स एक्सिस, ओके। अब ये जो तीसरी फिंगर है करंट की, मैं इसे करंट की डायरेक्शन में रखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा था पॉजिटिव वाई एक्सिस में, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो हमेशा करंट के अपोजिट मूव करता है। तो करंट की डायरेक्शन हम यहाँ क्या सपोज करेंगे माइनस वाई। तो इस फिंगर को सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को प्लस एक्स एक्सिस पे रखा, उसके बाद करंट की फिंगर को मैं नीचे लाऊंगा। तो ये देखिए ले आए, तो मुझे लगा मेरा जो थंब है मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, मेरी तरफ है, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मी। तो आंसर क्या होगा, द फोर्स विल बी
in plus z direction. ये आपको समझ में आया? By applying Fleming's left hand rule. अब आप बिल्कुल कंफर्म करो कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, इसको करना सीखिए आप। हमेशा याद रखिए प्लस जेड टुवर्ड्स मेरी तरफ, माइनस जेड मुझसे दूर, अवे फ्रॉम मी। Once you understand how to find the direction, फिर चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। It becomes very easy. अब देखिए कुछ और कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्शन पे आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप इसे ईस्ट माने, इसे वेस्ट माने और इसे नॉर्थ माने। प्लस जेड एक्सिस को नॉर्थ ले लो और माइनस जेड एक्सिस को ले लो साउथ, और ये हो गया वर्टिकली अपवर्ड, और ये हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप ये जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। अब दो एग्जांपल्स करते हैं हम लोग और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं। A proton is moving in east direction. A uniform magnetic field exists vertically upward, vertically upward. In which direction? Proton will experience a magnetic force. East direction, this is proton. So this is the direction of current. Okay, a uniform magnetic field exists vertically upward. So this is
magnetic field vertically upward. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लेते हैं. डोंट अप्लाई IJK, अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. FBI मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को ऊपर रखा. और FBI फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट की फिंगर को मैंने ईस्ट में रखा, मतलब प्लस एक्स एक्सिस पर. तो मुझे लगता है कि जो थंब है वो मेरी तरफ पॉइंट आउट करता है. आप जरा करके देखिए. मेरी तरफ. तो अब इसको लिखा कैसे जाता है? दिस इज अनदर क्वेश्चन. बाय अप्लाइंग, आंसर कैसे लिखा जाता है? बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स left hand rule, proton experiences the force in north direction. This is north and this is south. आपने इसे अप्लाई करके देखा क्या? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. Okay, come on, confirm it whether you understand or not. BI, तो मुझे पता चला कि थंब पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स मी. तो ये हो गया प्लस जेड एक्सिस, और प्लस जेड एक्सिस को मैं क्या सपोज करूंगा? नॉर्थ. आर यू एबल टू डू दिस? यू शुड कंफर्म इट. ओके, समझ में आना चाहिए ये. तो इस तरह से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब देखिए, कुछ एक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन चार्ज की वैल्यू क्या है? हम वैल्यू की बात कर रहे हैं. T 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. अच्छा, अब प्रोटॉन, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, मास ऑफ प्रोटॉन 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Charge on proton E 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Deuteron, isotope, mass of deuteron 2 AMU, 2 into 1.67
into 10 to the power minus 27 kg. Charge on deuteron E 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Alpha particle helium nucleus 2He4, 2 proton. Mass of alpha particle, sorry, 4 AME, 4 into 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Charge on alpha particle 2E, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. अब देखिए, charge on proton is to charge on deuteron is to charge on alpha particle will bear what ratio? 1:2. Mass of proton is to mass of deuteron is to mass of alpha particle will bear a ratio 1:2:4. 1:2:4. ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए. प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, ये सब न्यूक्लियस हमने शो करें. When you are done with this, tell me. ये सब आपको मालूम होना चाहिए. वैल्यू कूलम में चार्जेस की और चार्जेस का रेशियो भी मालूम होना चाहिए. इससे रिलेटेड फिर हमें क्वेश्चन मिलते हैं. You get the question in examination. ओके, ठीक है. अब देखिए, let's start. When a charged particle, heading दीजिए, when a charged particle enters a uniform magnetic field at right angle, suppose a uniform magnetic field exists, crosses normal to the plane of paper and inward. Suppose a charge plus Q enters a uniform magnetic field at right angles. At right angle, what will happen? It will definitely experience a magnetic force. Apply Fleming's left hand rule, FBI. Magnetic field cross है. That means normal to the plane of paper. आपने जहां ड्रॉ किया होगा and inward. मेरा पेपर इस तरफ है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, पर आपको ऐसे करना चाहिए. और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है,
ये v वेलोसिटी से एंटर करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और हम जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज कंसीडर्ड एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एफ बी आई, बी को इन्वर्ट रखा, मैग्नेटिक जहां आपने पेपर में ड्रॉ किया वहां करिए, बी को इन्वर्ट रखिए, और आपके राइट हैंड पे जा रहा है ये प्लस क्यू, तो एफ बी आई, करंट के फिंगर को राइट हैंड पे रखिए तो आपको पता चल जाएगा, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। ये फोर्स को मार्क करिए। और फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे when a charged particle having charge q enters a uniform magnetic field at right angle, then charge experiences a magnetic force perpendicular to both velocity and magnetic field. Since force is perpendicular to since force is perpendicular to velocity, so charged particle will move on a circular path। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बॉडी जब सर्कुलर मोशन करती है, जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन की खास बात क्या है? When a body performs circular motion, body experiences a force along the radius towards the center। जब भी whenever, आप एक बात याद रखिए, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, whenever the force is perpendicular to the velocity, force is perpendicular to the velocity, charge particle, the force is perpendicular to velocity, then body will always move on circular path। So please note it down। And that force we can write QVB, QVB। Okay, so that force is QVB।
It is equal to centripetal force. Centripetal force. So Q will be equal to mv square upon r. V will get cancelled. mv by r equal to mv upon qv, where r is the radius of circular path. In circular motion, kinetic energy always remains constant, and work done is always equal to change in kinetic energy. So in here the work done will be 0. तो बस आपको अब कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत याद रखने चाहिए. When charge particle enters a uniform magnetic field at right angle, it all moves on a circular path, and kinetic energy of charged particle remains constant, and work done by the by the magnetic field on particle is zero. Is zero. So please note it down and tell me whenever you are done. हमेशा याद रखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है दैट kinetic energy always remains constant, work done is always zero. तो रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल तो आपने निकाल ली mv अपॉन qv. m mass, v velocity, q charge, and v is the magnetic field, and v is the magnetic field. Radius of circular path. Radius of circular path.
ओके, सो यू अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे हम निकालेंगे इसमें टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of charge particle. In one round, it travels a distance 2 pi r. Now V can be written as r omega. Okay, so we know the actually there is no need to write V. V equal to 2 pi r by t, and we can write 2 pi r is mv upon qv. So Vt will be 2 pi mv upon qv. 2 pi mv upon qb. We will get cancelled. So the time period is 2 pi m upon qb, where t is the time period, m mass of charged particle, q charge on charged particle, b magnetic field. फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक राउंड में वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई आर, विच इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, एंड टी इज द टाइम पीरियड. सो इफ यू आर डन विद इट, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं. वन मोर अप्रोच इज पॉसिबल. तो चलिए उसको करते हैं. V equal to r omega, where omega is angular velocity, and omega can be written as 2 pi by t. ये देखिए वही वाली बात होगी, r को लिख दिया हमने mv अपॉन qb, b से v कैंसिल हो गया, t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb. एक बात याद रखिए, टाइम पीरियड does not depend upon the velocity of charged particle. दूसरी चीज, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन qb. m अपॉन qb. तो मेनली मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पे, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल पे और चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करता है. तो आप इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. A proton
and alpha particle enters the same magnetic field at right angle. Compare their time period. T equal to 2 pi m upon qb. मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, जो सेम होता है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट. तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m बाय q. तो प्रोटॉन अपॉन अल्फा पार्टिकल, मास ऊपर है इसलिए हो जाएगा mp अपॉन m अल्फा. चार्ज नीचे है डिनोमिनेटर में तो उल्टा चलेगा, q अल्फा बाय qp. अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का मास रेशियो कितना है. प्रोटॉन का 1 mu, अल्फा का 4 mu, तो 1:4. प्रोटॉन और अल्फा का चार्ज रेशियो, so Tp equal to T alpha 1/2. So you can write it as 1:2. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से. या आप दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अल्फा का टाइम पीरियड 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन होगा. तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं. आप इसे नोट कर लीजिए. Are you done with it? Okay. तो अगली क्लास में विल डू सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट. और फिर एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोलेनॉइड वगैरह भी इसमें कवर हो जाएगा. 2-3 क्लासेस में ये चैप्टर एंड होगा. देन विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, टेक केयर, स्टे सेफ.